Socholemu Garuntugo Saint Gamba, which means welcome to my village. The name of my village is Setu, but these days is popularly known as Shergaon to the outsiders. Hi, my name is Gombu Chiring, and Thungan is my surname or my clan name. This is my mom. Her name is Pentang Thungan. My village here in Shergaon, we are around 700 indigenous people, and in the rest other villages they are around 3,000. So altogether we are roughly 4,000. Shergaon has an area of around 5 square kilometer, which is a beautiful valley, rich in flora and fauna. We have numerous kind of birds, moths, butterflies, edible plants in the wild, and a very infant stream known as Dobloko flowing right from the valley. We basically follow Tibetan Mahayana sect of Buddhism, but also we have firm belief in our animism, which like we worship our nature gods. Unlike rest of India, we don't take too much of masalas, but occasionally we take hot chilies, we take spicy foods, and that too mostly boiled. We use fermented soybean and then fermented cheese and with sweetened pepper most of the time. Churoga akong zande ko chua njelo mungdang ko ti pitpa njelo mungte rungchua chamin ko rungba ga. So what she's saying is the fermented cheese chura. So you take it with zan, which is kind of our staple food, and then also with the rice, and sometimes these are made of buckwheat, millets, crushed corns, and rice. Churogi alang harti ning ba harti chulo ga harti chu ga to abu chang chelo churogi njelo na ohungo rakhan taino adot bophada chumagi njelo thai barbar chudena njelo nati abu chekung njelo na abu chang chekung nati gasi lungku abu chelo abu chang churogi chuno alang harti ba khanado. What he is saying is that since this chura is fermented, so while we cook it stinks. So maybe this won't comfort you while you have it. So but if you take it twice or thrice, you also get adapted with this dish. And once you get adapted with these things, you will definitely like the chura curries and the chutneys which we make out of it. So I'll show you how the cheese are made traditionally. So let's go to Tenzingaon. So we are here at Tenzingaon. So we are going to see Meme Kezangwangda. Like he has been making cheese for several years. So let's go and see him. हम इधर तेंदुगांव में बैठा है, मो छुरा बना के गई देख के बैठा है।
इन्हें तो बैठे और हमको नम जो कैसा होती है। अभी ये दूध हमारे का वो भर्ती होगा, भर्ती होने टाइम में तो भर्ती होने टाइम में तो मारेगा 2 दिन रखेगा भर्ती होके। भर्ती होके 2 दिन रखेगा, उसके बाद और मारेगा, मारेगा उसे मार के 2 घंटा में घी निकलेगा, 2 घंटा में घी निकलेगा। और घी निकल के बाल्टी में पानी में डालो, पानी में डाल के थोड़ा टान हो जाएगा। पानी में डाल के तो ये गोल गोल बनेगा, गोल गोल बनेगा। गोल गोल बना के ऐसे ऐसे जैसे बनेगा, ऐसे जैसे बनेगा, गोल 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 ऐसे वही जैसे निकलेगा, वो जैसे करके तो वो ये ठंडा में रखना है, ठंडा में रखना है। तो उसके बाद ये छोलकू जो इधर बर्तन हायांग में डालो, डिक्ची में डालो, डिक्ची डाल के तो उमिलना नहीं चाहिए, गरम होना चाहिए। वो गरम होने के में छुरा बन जाएगा, छुरा अच्छा से बन जाएगा। या अब बना देगा। उसको एक पुराना बढ़िया बोलते ऐसे बन के थोड़ा सूखना चाहिए, सूख के तो ऐसे टुकड़ा मुकड़ा करके ऐसे नालों में थोड़ा रख के तो सुबह होने में तो वो जैसे और भी बना के जून के 1 हफ्ता जैसे जून के रखने से 1 बार में 2 केजी निकलता है। बहुत अच्छा होता है, सब्जी में मुझे हो जाता है। और ये तेल में भी फ्राई करके घी डाल के वो फ्राई करके वो भी खा सकता है। वो खाने से बहुत टेस्ट है, विटामिन भी है, टेस्ट भी है और एक दवाई भी होता है। अच्छा शिव का ना।